Good morning to all of you. So today we are going to study anatomy of breastfeeding. Okay, so let's start the topic. Now this is the diagram of anatomy of breast. Okay, so breasts are, or mammary glands, they are modified sebaceous glands. Sebaceous gland means sweat glands, or these are also called as modified sudoriferous, SUDIROFEROUS, sudoriferous या sweat glands. ठीक है, they are 2 in number. And rib में देखने से you will find it extends from 2nd to 6th rib. Okay, so these are ribs. Okay, so breasts extend from 2nd to 6th rib. Okay, and they are accessory reproductive organs in females. Okay, so we know कि during puberty what happens is secondary sexual characteristics takes place, and one of the apart from different stages, one of the changes are changes which takes place in the breasts. Okay, so what you see in anatomy is we have talked about ribs. Now you have pectoralis major muscle. This muscle is pectoralis major muscle. So ये muscle के सामने है are the mammary glands. Okay, now is we have different lobes. ये एक lobe है, this is second lobe. So like this we have 18 to 20 lobes in each of the breasts. 18 to 20 lobes in each of the breasts. Okay, and I will show you another diagram where things will be better explained. So each of the breasts has 18 to 20 lobes, and each of the lobe has its own lactiferous ducts. Okay, lactiferous ducts मतलब जैसे for example in the alveoli of the lungs, ठीक है, it is like a grape work. तो वैसे ही we have, these are all milk secreting alveoli. Okay, so each of it is milk secreting alveoli, और हर लोब का milk secreting alveoli will converge मतलब जैसे एक common branch में आ जाएगा, that is called as lactiferous ducts. So these are different lactiferous ducts of different glands. Okay, lobes. Each breast has 18 to 20 lobes. So 18 to 20 lobes का अपना lactiferous duct रहेगा, and अपना lactiferous ducts में they will have its own branches of milk secreting alveoli. Okay, so this lactiferous ducts will converge मतलब ये देखो सब पास में आ रहा है, at the level of nipple. This will all come together. Okay, and under the areola, what is areola? This is dark colored structures which are present around the nipple, and under the areola these lactiferous ducts gets dilated, जिसको हम कहते हैं lactiferous sinuses. तो ये जो dilated portion है इसको हम क्या कहते हैं? lactiferous sinuses. Okay, तो lactiferous duct किसको बोलते हैं? lactiferous ducts are ducts which carry milk from different alveoli, we have 18 to 20 lobes. तो हर एक लोब का अपना lactiferous duct है, हर एक लोब का अपना lactiferous sinuses. And what are sinuses? Sinuses are dilated portion of the lactiferous ducts which are present under the areola. Okay, so this was all about. Now we'll come to the next slide. Now this was, excuse me. So this was what we studied. So each of the breast has 15 to 20 lobes, and one lactiferous duct open at the nipple. अभी जो मैंने आपको बताया, they dilate to form lactiferous sinuses at areolar level. Okay, each lobe has 10 to 100 lobules. Lobules मतलब जो milk secreting alveoli है, ठीक है. So what is a lobule? Lobule is a group of milk secreting alveoli. Okay, now is Cooper's ligament are fibrous septa which provides the support to the nipple, to the breasts. Okay, Cooper's ligaments are there, and alveoli are
alveoli is surrounded by myoepithelial cells. एक alveoli जो है वो it is covered by myoepithelial cells. ठीक है, myoepithelial cells का कवरिंग ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे जूड़ा बनाते, जूड़ा के ऊपर नेट लगाते हैं, तो इट इज समथिंग ऑफ दैट टाइप. एक नेट जैसे जूड़ा को कवर करता है, वैसे ही myoepithelial cells आर कवरिंग दी मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई. ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा. हर एक ब्रेस्ट में यू हैव 15 to 20 lobes. Every lobe has a lactiferous ducts which open at the nipple. Then lactiferous ducts dilates to form lactiferous sinuses. कहाँ पर? areola के ठीक नीचे. Okay. Now हर lobe में it has 10 to 100 lobules. Now what are lobules? Lobule is a group of milk secreting alveoli. And apart from that, Cooper's ligaments are there, are fibrous septa which supports the breast, and each of the alveoli is surrounded by myoepithelial cells. Okay. Now this is I think this diagram makes it very clear. These are the ribs. Okay. Now these are the lactiferous sinuses, and this is the lactiferous duct. These are all lobules. Okay, these are all lobules, and every lobe, this is one lobe, this is second lobe, this is third lobe. So like this many lobes are there. So each of this lobe has 15 to 20 lobules. Okay, and see every lobule is converging at its own lactiferous ducts. ठीक है, ये lactiferous ducts कहाँ पर? areola के ठीक नीचे. They are become dilated, and they dilate because ये एरिया का जो भी मिल्क आएगा, this will be collect under the areola. Okay, so these are the different lactiferous sinuses. Okay, and these are openings from where milk comes out. Okay, so these are subcutaneous fat. Okay, I think this diagram gives you a very clear picture of what I wanted to convey. Now we'll study about structure of breast. Areola is 2.5 centimeter at the center of the breast, and what we have is these are Montgomery's glands. Montgomery was an Irish obstetrician, so this glands has been named after it. ठीक है, so what happens in pregnancy is these lactiferous ducts, these Montgomery's granules, they become bigger, they become darker, so that they produce sebum like substances to decrease the friction while feeding the baby. Okay, and it is 80% fat and 20% glandular tissue. Now this we will study physiology of lactation. Okay, physiology of lactation का मतलब ये है कि see what we find is during pregnancy no milk production is there, but as soon as the baby is born, milk starts coming. Now how does this takes place? This is all based on different hormones. So these are physiology of lactation. Anatomy is now complete. ठीक है, anatomy जो मैं बताना चाहती that is all over. Now we are coming to the basic point, that is physiology. Now physiology of lactation or feeding is divided into 4 phases. First is mammogenesis, that is preparation of breast. Second is synthesis and secretion from breast alveoli, that is called as lactogenesis. And third is ejection of milk, that is galactokinesis. And excuse me, and last is maintenance of lactation, that is galactopoiesis. Okay, galactopoiesis. समझ में आ गया? लास्ट लाइन इज नॉट विजिबल, उसका आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए, GALACTOPOIESIS, galactopoiesis. ओके, तो फर्स्ट इज मैमोजेनेसिस, सेकेंड इज लैक्टोजेनेसिस. मैमोजेनेसिस का मतलब प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट. ये सारे फेजेस हम लोग अभी आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस फ्रॉम breast alveoli, lactogenesis. Ejection of milk, galactokinesis. And galactopoiesis is maintenance of lactation. Okay, now we'll come to each of it. Now this is mammogenesis. If you see this diagram, you will find
that these are the different stages. Okay, this is non-pregnant, pregnant and lactating. So you can see the difference in size and difference in the color and from prominence of areola and the nipple. Okay, so here what you find is a non-pregnant stage where you have these structures available, but these are all small in size. Okay, lactiferous duct is there, lactiferous sinuses is there, but these are all small in size. But in pregnancy there is remarkable growth of all these things. Remarkable growth of what? There is increase in the size of the breast, there is increase in the size of the milk secreting alveoli. If you compare this, there is remarkable increase in the size of the alveoli. You will find that the lactiferous ducts, they become more prominent. Lactiferous sinuses also becomes more prominent. So that is at during pregnancy. And during lactating, what you find is this is all filled with milk. So that is why this is whatever structures were prepared during pregnancy, during lactation, now the whole thing has started properly, and these are all filled with milk. Okay, so what are the changes which takes place? First, there is increase in the size of breast. Second is there is increase in lobulo-alveolar system. What is lobulo-alveolar system? That is increase in the size and number of milk secreting alveoli. The lactiferous ducts becomes very prominent. ठीक है, ये पूरा ducts है, ये एकदम prominent हो गया. Then the lactiferous sinuses है, वो भी अच्छे से prominent हो गया. So these are all preparation of structures, but actual functioning starts at the lactation. So that is why जो भी preparation हुआ था, this gets filled with milk. So this is all mammogenesis. Okay, so there is remarkable growth of ductal and lobulo-alveolar system. So this is clear from the diagram. Okay, now we'll come to next, lactogenesis. Okay, ये second phase हमारा first phase is now over. Second is lactogenesis. Now what happens is during pregnancy two things are there. First is there is high levels of estrogen and progesterone. ठीक है, there is high level of actually progesterone has come to this side. Okay, so there is high level of estrogen and progesterone. Okay, so this high level of estrogen and progesterone makes the breast tissues unresponsive to prolactin. ठीक है, and during pregnancy anterior pituitary secretes a hormone which is called as prolactin. ठीक है, but breast tissues are unresponsive to prolactin because of high levels of estrogen and progesterone. बात समझ में आ रहा है? प्रेगनेंसी में क्या है? there is estrogen और progesterone दोनों बहुत हाई है. ठीक है, और प्रेगनेंसी के समय एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा. प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा है, बट प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड दिस इज सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. बट द ब्रेस्ट टिश्यूज आर अनरेस्पॉन्सिव टू प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन आ रहा है तो भी वो ब्रेस्ट टिश्यूज रेस्पॉन्ड नहीं करेगा. वाई? बिकॉज हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन do not allow it to respond to prolactin. बात आपको समझ में आ रहा है? So pregnancy में two things are there. First is anterior pituitary is producing a hormone which is called as prolactin, but prolactin is unable to respond. Respond मतलब उसका काम क्या है? prolactin का काम क्या है? Milk secreting alveoli at the breast को stimulate करेगा और milk बनाना शुरू कर देगा, पर ये काम नहीं हो पाएगा pregnancy के समय. Why? Because there is high level of estrogen and progesterone. ठीक है. Now what happens in lactogenesis का second phase is after delivery. Soon after delivery estrogen, progesterone और withdrawn. ठीक है, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है. estrogen, progesterone, there is a sharp decline. तो anterior pituitary से prolactin हार्मोन निकलता है. यही चीज रोक रहा था estrogen, progesterone high levels. So that is not there. So milk secretion in fully developed mammary glands. ठीक है, हमने अभी मैमोजेनेसिस में पढ़ा that there is remarkable increase in the size and number of milk secreting alveoli. So after delivery estrogen progesterone का लेवल फॉल हो गया, anterior pituitary से prolactin निकला, कोई रोकने वाला नहीं था, सीधा prolactin is a hormone, so directly it will be poured into the bloodstream and
फुल्ली डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट्स, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोजेनेसिस और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। लैक्टोजेनेसिस का काम क्या है? सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिसको हमने दो भाग में बांटा। वन वॉज बिफोर डिलीवरी, जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ विच प्रोलैक्टिन निकला तो भी काम नहीं कर पाया भाई, बिकॉज प्रोलैक्टिन इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड progesterone will not allow it to do so. But after delivery what we find is eastern progesterone fall हो गया, रोकने वाला कोई नहीं था। prolactin will come directly to the breast and stimulate the milk secreting alveoli to produce milk. Okay, now is third phase we are coming, galactokinesis. अभी milk production तो हो गया, but milk has to be ejected, that is called as a let down reflex. तो कैसे होगा वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा निकल रहा है? प्रोलैक्टिन, जिसका काम है मिल्क सिक्रीट करना या बनाना। ओके, अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकल रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दिस इज अ मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। How does it occur? The baby sucks at the breast, न्यूरल स्टिमुलेशन ब्रेन में जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट होगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन विल स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स। मैंने आपको बताया था कि मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई के ऊपर जैसे जूड़ा के ऊपर का नेट रहता है वैसा मायोएपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। इट इज ऑल क्रिस क्रॉस, पूरा मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई के चारों तरफ एक नेट के जैसा है मायोएपिथेलियल सेल्स। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि एक बैलून है जिसमें अभी मिल्क भरा हुआ है। बैलून रिप्रेजेंट्स द मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई, इसके ऊपर है ये मायोएपिथेलियल सेल्स। मायोएपिथेलियल सेल्स कैसा है? जूड़े के ऊपर का नेट जैसा, चारों तरफ मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई के चारों तरफ एक नेट के जैसा है this milk secreting मायोएपिथेलियल सेल्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन निकलता है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसको? मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई को, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्योंकि मायोएपिथेलियल सेल्स को ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्ट किया। तब क्या होगा? मिल्क स्टार्ट्स टू फ्लो। कहाँ से? एक एक मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई से मिल्क फ्लो होना स्टार्ट होगा। इट विल कम टू लैक्टिफेरस डक्ट्स, लैक्टिफेरस डक्ट से लैक्टिफेरस साइनसेस तक आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क आपको क्लियर है, मैं समझ रही हूँ। द बेबी सक्स एट द ब्रेस्ट, व्हाट हैपेंस इज न्यूरल स्टिमुलेशन आर सेंट टू ब्रेन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकला। ऑक्सीटोसिन का काम है मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, और मायोएपिथेलियल सेल्स कहाँ पर है? इट इज ऑल सराउंडिंग ईच ऑफ द मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई। मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई के चारों तरफ नेट का जैसा है। ये जब मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट्स में आएगा, लैक्टिफेरस डक्ट से लैक्टिफेरस साइनसेस में आएगा, ठीक है। तो आप एनाटॉमी को दिमाग में रखते हुए, लैक्टिफेरस डक्ट्स हर एक लोब में अपना लैक्टिफेरस डक्ट्स है, उसमें मिल्क आएगा, उसमें मिल्क से फिर बह के कहाँ पर आएगा? इट विल कम टू and collect in lactiferous sinuses. Lactiferous sinuses कहाँ है? areola के ठीक नीचे, okay. Now comes galactopoiesis, fourth phase, okay. Now prolactin is the single most galactopoietic hormone. What is galactopoiesis? अभी this lactation has to be maintained, that is called as galactopoiesis. सिर्फ एक बार feeding नहीं, this feeding has to continue for 2 years, okay. So till this lactation has to be maintained. तो इसको हम prolactin is the single most important galactopoietic hormone. galactopoietic hormone मतलब मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन के लिए prolactin सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो कैसे होगा? फॉर मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव एंड कंटिन्यूस लैक्टेशन, frequency of sucking more than 8 hours in 24 hours, okay. So if the baby is sucking more than 8 hours in 24 hours, sufficient prolactin is produced. हमको मालूम है when the baby sucks at the breast, 2 hormones are released. One is prolactin from anterior pituitary जिससे मिल्क बनेगा, second is followed by oxytocin which will cause let down reflex, ठीक है। तो जब तक मिल्क बनेगा नहीं, ऑक्सीटोसिन काम नहीं कर सकता, ओके। सो बनेगा कब? when the baby sucks at the breast. So more the baby sucks, more
प्रोलैक्टिन इज प्रोड्यूस। ठीक है, क्लियर है? जितना बेबी, इफ़ यू वांट द मदर शुड प्रोड्यूस मोर मिल्क, तो आपको क्या मदर को बोलना है कि फीडिंग कराओ, एक दिन में मोर देन 8 आवर्स फीडिंग कराओ। तो फीडिंग कराने से प्रोलैक्टिन निकलेगा, प्रोलैक्टिन निकले से मिल्क बनेगा। ओके, सो इट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज फीडिंग। ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के बारे में है, दिस इज सिक्रेटेड मोर एट नाइट। ठीक है, अगर आप ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल्स देखेंगे, विल फाइंड कि मोर प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड एट नाइट। इसीलिए वी एडवाइज द मदर्स एटलीस्ट नाइट में एक बार फीडिंग देना है, बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस्ड एट नाइट, तो 1 नाइट फीड इज एनकरेज्ड। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन से ओवुलेशन इज सप्रेस्ड। ठीक है, व्हाट इज ओवुलेशन? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, तो दैट इज सप्रेस्ड। सो हाउ इज इट हेल्पफुल? सो प्रोलैक्टिन सप्रेसेस ओवुलेशन। तो इससे फायदा क्या है? इट कॉजेज एन ओवुलेटरी एमेनोरिया। उसका मतलब है वो एग रिलीज नहीं हो रहा है, सो द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसीज आर रिड्यूस्ड। ओके, सो दिस इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड वेयर द चांसेस ऑफ कंसेप्शंस आर रिड्यूस्ड। ठीक है, प्रोलैक्टिन का काम सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, दिस ऑल्सो सप्रेसेस द ओवुलेशन। थर्ड है, दिस इज सिक्रीटेड आफ्टर द फीड टू प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड। ठीक है, दिस इज सिक्रीटेड आफ्टर द फीड टू प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड। ठीक है, प्रोलैक्टिन निकला, फीड बन गया, नेक्स्ट कब निकलेगा? आफ्टर द फीड, क्योंकि जब तक मिल्क इज प्रेजेंट प्रोलैक्टिन कैन नॉट बी सिक्रेटेड। जैसे ब्रेस्ट एम्प्टी होगा, अगेन दिस विल बी स्टिमुलेटेड। ओके, नाउ विद ऑक्सीटोसिन, दिस इज प्रोड्यूस्ड बिफोर और ड्यूरिंग द फीड टू मेक द मिल्क फूड। ठीक है, फीड के पहले प्रोड्यूस होगा, वाई? बिकॉज इफ द बेबी हैज टू फीड, ऑक्सीटोसिन काम करना पड़ेगा, मायोपिथियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी इजेक्शन ऑफ मिल्क को हम लोग लेट डाउन रिफ्लेक्स से बोलते हैं, देन ओनली द मिल्क विल कलेक्ट इन द एरियोला। देर में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, इसका दूसरा काम क्या है? इट मेक्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, इट मेक्स यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा है? चांसेस ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज होने का चांसेस कम है। ठीक है, and this is the role of oxytocin. ठीक है, so oxytocin is produced before और during, और prolactin का प्रोड्यूस होता है आफ्टर फीड टू मेक द नेक्स्ट फीड, और इसका दूसरा एक्शन किस में है? यूट्रस में है, और प्रोलैक्टिन का एक्शन किस में है? ओवरीज में है। It does not, it suppresses ovulation and this helps in contracting the uterus. तो फीडिंग करने से मदर को क्या फायदा है? चांसेस ऑफ पीपीएच आर रिड्यूस्ड। Now with enhancing and hindering factors of prolactin reflex. Enhancing factors, enhancing मतलब prolactin कब ज़्यादा निकलेगा? First is emptying of breast. As long as the breasts are full, prolactin will not be released. तो इसलिए frequent feeding is specified. Second is when the baby sucks at the breast. Third is expression of breast milk. Expression of breast milk को हम लोग EBM भी बोलते हैं, express breast milk. Suppose अगर बेबी प्री टर्म है, ठीक है, तो जितना सपोज इफ इट इज 36 वीक्स होगा तब अच्छे से बेबी सक कर सकेगा। ठीक है, सपोज अगर उसके पहले प्री टर्म बेबी है, 37 वीक्स के पहले पैदा हुआ, सो सकिंग रिफ्लेक्स उसका ठीक से डेवलप होता नहीं। सो एट ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू हैव वर्कड इन NICU ऑफ आवर हॉस्पिटल, आपने देखा होगा कि मदर्स मिल्क एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। ठीक है, सो दैट इज इफ द बेबी इज नॉट सकिंग, milk is expressed manually or maybe by using a breast pump, and then it is given either by a palatite or through a spoon or through a feeding tube. ठीक है, so that is called as expression of breast milk. So when you express, तो फायदा क्या होता है? There is emptying of breast. Okay, so even if the baby is not sucking, but if emptying of breast is by expression of milk, this will cause prolactin to release. फिर नाइट फीड्स का हमने पहले ही आपको बताया था कि prolactin is secreted more at night, so that is why at least one night feed is encouraged. Now what are hindering factors? Hindering factors का मतलब क्या है कि किससे prolactin नहीं होगा या कम होगा?
प्री लैक्टियल्स मतलब ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ है, कुछ लोग जन्म कुट्टी देते हैं, कुछ लोग शहद चटाते हैं। प्री लैक्टियल्स का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग के पहले जो भी आप दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्री लैक्टियल्स। तो इससे क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता है बिकॉज द बेबी इज नॉट सकिंग एट द ब्रेस्ट। फिर दूसरा है बॉटल फीडिंग। सो इफ यू फीड बाय बॉटल, the baby stomach will be full and the baby will not be feeding. Next is incorrect positioning. There are different positions. Incorrect positions रहेगा तब भी the baby will not be able to feed. Next is painful breast conditions. हम लोग मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं करना चाहती because we'll take another class on this problems of breastfeeding. ठीक है, so painful breast condition can be sore nipples, most common breast conditions. ठीक है, तो उसका वो कैसे दिखता है, क्या है कॉजेस, वो हम लोग प्रॉब्लम से पढ़ेंगे. सो एनी प्रॉब्लम विच कॉजेस पेन, अगेन द मदर विल नॉट बी एबल टू फीड प्रॉपरली. ओके, सो दीज आर एनहांसिंग एंड हिंडरिंग फैक्टर्स. नाउ एनहांसिंग एंड हिंडरिंग फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन. ये देखो क्या है, थिंग्स लवली ऑफ द बेबी. व्हेन द मदर थिंग्स लवली ऑफ द बेबी, प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया. देन इज कॉन्फिडेंट, यस शी इज एबल टू फीड. तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इन द एंटीनेटल पीरियड यू हैव टू डिस्कस हर इश्यूज. इफ शी इज हैविंग एनी डाउट्स दैट हैज टू बी क्लियर्ड, शी हैज टू बी टॉट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. कब स्टार्ट करना है, वी स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग within half an hour of birth. Okay, so all these things, how to give, when to give, what are the points to be kept in mind, everything has to be told at the antenatal period, so that by the time the baby is born she is confident enough to feed the baby. Next is the sound of the baby. Baby produce some sounds, okay, which are called as cues. Okay, so these are on sight of the baby. ये सब से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होगा, थिंग्स लवली ऑफ द बेबी, कॉन्फिडेंस दैट शी इज एबल टू फीड द बेबी प्रॉपरली. नेक्स्ट इज साउंड ऑफ बेबी एंड साइट ऑफ द बेबी. दिस ऑल कॉजेज ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स. नाउ व्हाट आर द हिंडरिंग फैक्टर्स. ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स कब काम नहीं करेगा, ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वरीज, ठीक है, कई बार we have to find out कि why is the mother worried, and as far as possible जो भी उसका चिंता का कारण है that has to be removed. कई बार न्यूबॉर्न बेबी के साथ में कई बार मदर को पूरा बात पता नहीं रहता है, इसलिए वो अननेसेसरी वरी करती है. तो एज अ नर्स वी हैव टू फाइंड आउट what are the causes of worries and try to as far as possible to decrease her worries. क्योंकि worries रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन तो हो जाएगा बट लेट डाउन नहीं हो पाएगा. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प द मदर टू रिलैक्स. अगर वो स्ट्रेस में रहेगी, वरी में रहेगी, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस मिल्क. टू प्रोड्यूस तो हो जाएगा पर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा. ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा तो मिल्क विल नॉट फ्लो under the level of the areola. Okay, next is embarrassment, that is privacy. Privacy has to be given to the mother so that she can feed. Then all painful conditions has to be reduced. Then any doubt she is having, that has to be rectified or clarified ताकि all this her oxytocin can be released properly. Okay, now is देखो ये है stomach capacity of the newborn. Day 1 में it is only a size of the cherry. तो बेबी को कितना चाहिए, 5 to 7 ml. Day 3 में it is a size of a walnut, okay, 20 to 27 ml. Day 7 में it is size of an apricot, 45 to 60 ml, and by day 30 it is a size of the large egg. तो ये साइज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल निकलता है first 3 days. Okay, so colostrum is 15 to 20 ml in a day, but that is much more than sufficient for a newborn baby. तो कई बार लोगों को ये लगता है कि इतना कम निकला, whether it is sufficient for the baby or not. This is the size of the stomach. Okay, so day 1 the stomach is very small, only size of the cherry, and gradually the size increases. But gradually as the size of the stomach increases, the amount of breastfeeding also increases. Breast milk also increases. Okay, so that's why if the mother is feeding more than 8 hours per day, she did not give any drop of water, even nothing is to be given. She can exclusively breastfeed the baby. Okay, and now we'll leave this ounces, we'll skip this slide. Now these are average production of milk. Okay, day 1 it is per feeding is 2 to 10 ml.
24 hours में 31, okay, but by day 7 you will find it is 300 to 600 ml. So this again indicates the amount of breast milk which is secreted from different days, okay. So this is by day 7, then second and third week it is 60 to 90 ml. This is per feeding, and by 1 to 6 months it is 90 to 120 ml. So gradually, what I want to say from this slide is, gradually as the days pass on, the amount of breast milk per feed increases. So per feed it is increasing, so naturally per feed 24 hours will also continue to increase. Now these are the types of breast milk. First is colostrum, second is transitional milk, third is mature milk, fourth is preterm, then is foremilk and high milk. Colostrum is secreted on first 3 days, okay. First 3 days is colostrum. So colostrum is sticky, is yellowish in nature, but it is full of antibodies. कौन से एंटीबॉडीज? मेटल एंटीबॉडीज, ठीक है. ये मेटल एंटीबॉडीज कहाँ से बना? अभी बेबी पैदा हुआ, इसके पहले तक मदर को जो भी बीमारी हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, उसका एंटीबॉडीज जो भी बना होगा, दैट द बेबी विल बी गेटिंग, ओके, थ्रू कोलेस्ट्रम. तो उसको इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज द बेबी गेट्स द रेडीमेड एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. नाउ इज ट्रांजिशनल मिल्क, 3 डेज तक ही आया, ठीक है. Then transitional milk is there between colostrum and mature milk, okay. So next 4 to 5 days will be transitional milk. उसके बाद mature will continue till the end of lactation, ठीक है. Now what is preterm milk? Preterm milk मतलब 37 weeks के पहले अगर कोई बेबी पैदा हुआ, so that mother will produce preterm milk. So preterm milk has more amount of calories, more amount of protein, more amount of all those qualities which are required for a preterm baby. तो preterm baby suppose 32 weeks में पैदा हुआ, तो 32 weeks से लेकर 40 weeks तक preterm milk निकलेगा, ठीक है. Then it will be mature milk. Foremilk का मतलब क्या है? जो feeding, suppose if the mother feeds for 15 minutes, so initially जो milk निकल रहा है that contains more amount of water, so that is foremilk. Hind milk मतलब towards the end of the feeding, hind milk. तो दोनों का डिफरेंस क्या है? Foremilk contains more amount of water, जिससे बच्चे का प्यास बुझेगा, which satisfies the thirst. Hind milk contains more amount of fat, जिससे उसका hunger satisfy होगा, ठीक है. So what we want is, एक बार के फीडिंग में 15 to 20 मिनट्स हर फीडिंग होना चाहिए, ताकि बेबी को वाटर भी मिले, जिससे उसका थर्स्ट सेटिस्फाई हो, एंड देन द बेबी शुड आल्सो गेट फैट so that it can satisfy the hunger, okay. So these are the different types of breast milk. So we have 6 types of breast milk. Now these are the feeding reflexes. We have 3 feeding reflexes: rooting reflex, sucking, swallowing, okay. Next is the rooting reflexes. When something touches the lips, the baby opens the mouth, put the tongues down and forward, okay. The baby puts tongue down and forward. So when we touch the cheek, okay, the baby will turn the head to one side, okay. Suppose if you touch to the right side, right cheek, the baby will turn to the right side. If you are touching the left cheek, the baby will turn the face to the left side. So that is rooting reflex. Sucking reflex, that the baby, when something touches the palate, so when this part is introduced inside, so this touches this nipple touches the posterior pharynx and sucking reflex start हो गया. And once sucking reflex start, gum margins will press over areola, और इसके नीचे हम लोग ने एनाटॉमी पढ़ लिया है, क्या है? लैक्टिफेरस साइनसेस. तो लैक्टिफेरस साइनसेस प्रेस होता है, मिल्क विल बी कलेक्टेड हियर एंड द बेबी विल स्वैलो, ओके, ठीक है. रूटिंग इज यू जस्ट touch the lips or maybe cheek, the baby will turn the head, open the mouth, put the tongue down and forward. Second में, when this part is inside the baby's mouth, this part will touch the posterior pharynx और sucking reflex stimulate हो जाएगा. The baby starts sucking. So when the baby starts sucking, these gum margins will press over the areola and this buccal cavity will be full of milk. When the buccal cavity is full of milk, then swallowing reflex. इसका sequence पहले rooting, second is sucking, third is swallowing. Okay. So
when something apart from it, gag reflex, when something touches anterior part of the tongue, the baby pushes it out. So main is these three: rooting, sucking and swallowing. So these are signs of good attachment. Okay, so these are different steps how the baby feeds. Okay, so these are the 4 things. First is, if it is correct latch on, you will find whole of the areola is inside the baby's mouth. The lips are curled outward. ये आप देख रहे हैं, the baby's mouth is wide open. Okay, baby's mouth is wide open. Then the lips are curled outside. The chin is touching the breast. Okay, and very little areola is visible. These are the signs of good attachment: mouth wide open, lip curled outward, chin touching the breast, and very little areola visible. Okay, so this was all about anatomy of breastfeeding. Next class will be on advantages of breastfeeding, and third class will be on the problems of breastfeeding. I hope you have understood the topic. Thank you. Thank you.